Hello everyone. So we are here to discuss the revision strategy for the IBPS SO Law Officer exam, which is to be conducted on December 26th. So now that we have only 7 days left for the preliminary exam, it's very important to make the best use of our time. A lot of times it happens that we study a lot, but at the last moment we just panic and we don't know how to revise such a huge syllabus. So let's dive into how to make a perfect revision when talking about this law officer exam. It's a mega revision because this plan is going to help you do an all-around revision so that you don't worry at the last minute, and it boosts your confidence. So the very first thing that we need to understand over here is the pattern of the preliminary exam, which I'm sure many of you who are preparing are very well versed with it. But here there are a few pointers that I would like to highlight. See, the first thing is we have an English section over here which has 50 questions, but they carry only 25 marks. So one question carries only half marks. Now for English, what we see is the time is 40 minutes, but it is going to have 1 to 2 passage based questions. So while knowing the pattern of the exam, we don't just need to look at the questions and the marks allotted. We also need to focus on the type of questions that we are going to face. Now secondly, we have the reasoning section. Here each question has only 1 marks allotted to them, so there are 50 questions worth 50 marks and we have 40 minutes. Now solving 50 questions in 40 minutes is no small deal, so you have to know which questions to attempt and which ones to not. And the third and the most unpredictable section, which most of the students fear, is the GA and banking awareness. GA here is the general awareness, and banking awareness is the current affairs related to banking, which we all must know if we really want to clear this exam. This is a very scoring subject, but also it is really vast, and a lot of times students very easily clear the cutoffs for English and reasoning, but they fail to do so for the GA and the banking awareness section. So this is something which we need to understand very clearly and what strategy to adopt for our revision. Now another very important thing here is there are sectional timings, so speed matters a lot. Speed is something which needs to be taken care of, and that is going to come only with practice. So let's move on to most important part of our plan. See, planning is important, and it is not going to be the same plan for every student. We all have our own set of strengths and weaknesses, but what comes handy over here is knowing your strengths and weaknesses. Once you're clear with this, you're going to devise a perfect plan for your studies as well as for your revision. And yes, you have to execute it, you have to put in your effort, and you have to let go the fear. So there are some do's and don'ts which I really want you all to focus on. It's not just important to know what to do, it's really important to know what not to do. तो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है. पहली बात ये कि हमें मॉक टेस्ट देने हैं हर दिन. अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, so in this 7 days time you can attempt 2 mocks every day. I'm sure a lot of you must be doing a lot of mock tests, but now that only 7 days are remaining, just do 2 mock tests. You can schedule them as one in the morning and one in the evening. And the second most important step is to analyze the mocks. Now how do you analyze the mocks? See, when you give any mock test, there are a number of mock tests available these days on online platforms, and I'm sure you all are going to make very good use of it. But when you are doing the self-analysis, you need to know what kind of questions are there where you are doing some recurring mistakes. कुछ mistakes होते हैं जो हम बार बार repeat कर रहे होते हैं. हमारी practice के बाद भी हम उन्हीं questions पर अटकते हैं, और हमें देखना है कि ये किस तरीके से इन्हें solve करना है. So once you know which questions you are faltering at, you need to practice more of those. And the third thing is time bound practice. I've seen a lot of students who keep giving mocks in the last 5-6 days
और जब उनके स्कोर्स उनके मिनिमम टारगेट तक नहीं आते, दे सिंपली गेट फ्रस्ट्रेटेड. प्लीज़ डोंट डू दैट. Now, in these 7 days, mock tests are going to simply let you know what are your weak areas and what are your strengths. Play on your strengths and try brushing up your weak areas. This is what you can do for the next 7 days, and stop worrying कि हमसे ये question solve नहीं हो रहा है. Just don't over analyze it. आप अपने mock के answers को analyze करें और उनसे सीखें. The fourth and the most important point is you have to consolidate your general awareness and the banking awareness section जो भी आपने पढ़ाई की है. Now how do you consolidate this? This is one thing which a lot of students make a mistake at. See, I'm sure a lot of you would be reading newspapers either in Hindi or in English, और आप सभी ये जो मंथली कंपाइलेशन होते हैं मैगजीन्स के कोई ना कोई ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, ईच वन ऑफ देम अवेलेबल आउट देयर इन द मार्केट इज़ गुड. सारे ही अच्छे हैं, पर आपको करना क्या है? आपको वो उठाना है मंथली कंपाइलेशन जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं और उसे कंसोलिडेट करिए. अगर आपने कोई मैगजीन उठाई है या आपने अगर न्यूज़पेपर से खुद के नोट्स बना रखे हैं और वो 50 पेज नोट्स हैं या 100 पेज नोट्स हैं, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप 5 से 6 पेजेस पढ़िए और उसे कंसोलिडेट करने की कोशिश करिए एक पेज में. सो दैट वंस बिफोर द एग्ज़ाम, नॉट वंस, एक्चुअली 4 to 5 टाइम्स, जब आप उसे देखें तो आपके मेमोरी के फ्लैशबैक में वो रहे कि ओके, दिस इज़ अ चार्ट विच आई हैड मेड, है ना. And you should just remember the key points now, because see, this is going to be an MCQ. You're not supposed to write long answers. So what is the best way to consolidate and to increase your focus in this GA section? कि आप अपने पेपर में जो भी आने वाला है उस पूरे इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप टोटली कभी कवर नहीं कर पाएंगे. इट इज़ सो वास्ट. बट ऑफ कोर्स आपने जो भी पढ़ा है अब उसे आप फटाफट कंसोलिडेट करिए. ट्राई टू ब्रिंग अ 50 पेज नोट और 100 पेज ऑफ योर नोट्स टू मैक्सिमम 10 to 12 पेजेस, और उसे बार बार मल्टीपल रिविजन्स करिए. Now why I am saying multiple revisions? See, it is very important to have a schedule for your revision. आप एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द परफेक्ट टाइमिंग फॉर अ रिविजन. कुछ बच्चे सुबह में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटेन करते हैं, and a lot of us are night owls, we like reading at night. So what you have to do is you simply have to take out 15 minutes just before you sleep and 15 minutes just when you wake up and go through this consolidated GA notes. मैं GA पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ because reasoning you can command with practice, English की reading speed you can command with practice, but when it comes to GA and banking awareness, the most common problem which the students face is हमें ये question नहीं आता था, हमने कभी पढ़ा नहीं था. जी, आपने बिल्कुल पढ़ा था बट आप वो रिटेन नहीं कर पाए. वो इसलिए क्योंकि मल्टीपल रिविजन्स नहीं हुए, और वो इसलिए क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए थे या आपने जिस भी मैगजीन से पढ़ी थी वो इतने लंबे थे कि लास्ट मोमेंट में आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाए. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. सिंपली कंसोलिडेट योर GA and current affair notes and you're good to go. And the third and the last important point is know your good attempts. Now what is this good attempts? हमें पता है कि हमने हर सेक्शन में हमें कितने क्वेश्चंस फेस करने हैं, बट व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर गुड अटेम्प्ट? आपने कितने अटेम्प्ट किए तो आप सेफ हो गए? सी, देयर इज़ नो फॉर्मूला फॉर दिस बिकॉज हर साल कट ऑफ्स वेरी कर रहे हैं, एंड नाउ दैट द नंबर ऑफ सीट्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड विद एवरी अटेम्प्ट. आपने देखा होगा कि सीटें कम हो रही हैं. सो ऑफ कोर्स द कट ऑफ इज़ गोइंग टू बी a little higher than the last year as can be expected given the number of seats, और आपको इसमें अपनी जगह बनानी है. सो यू मस्ट नो कि आप मिनिमम कितने क्वेश्चन हर सेक्शन में करेंगे, और इसमें आपकी मॉक टेस्ट भी काफ़ी मदद करेंगे. सो प्लीज़ गिव मॉक टेस्ट, डोंट टेक इट लाइटली. मॉक टेस्ट दीजिए. अगर आप सिर्फ 8 से 10 मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, डू गिव देम सीरियसली एंड एनालाइज इट. गुड अटेम्प्ट्स आपके कुछ रीजनिंग में क्या होता है, जैसे you don't need to attempt all the 50 questions. Of course you won't be. अगर आपने बहुत तगड़ी प्रैक्टिस की है तो आप कर लेंगे. आपको केवल कट ऑफ क्लियर करना है, तो आप उसमें उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको कट ऑफ क्लियर करा देंगे, सेक्शनल भी और ओवरऑल कट ऑफ भी. कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं और वो आपका काफ़ी टाइम खाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे और वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं. आपका मॉक टेस्ट आपको ये हेल्प करेगा जानने में कि आप किस टॉपिक्स में थोड़े
स्ट्रॉन्ग हैं और उन वैसे क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करें और उन्हें जल्दी करें। ये एग्ज़ाम रूम में आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और साथ ही साथ आपका जो टाइम जो है वो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। और लास्ट में आप जो लंबे लेंदी क्वेश्चंस हैं जिन्हें लगता है कि आप शायद कर पाएंगे, शायद नहीं भी कर पाएंगे, उन्हें आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर गुड अटेम्प्ट्स कि आप अगर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप सेफ है, एंड दैट यू विल ओनली गेट टू नो थ्रू योर मॉक टेस्ट्स। जैसे अगर किसी ने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं रीजनिंग में, आई थिंक दैट पर्सन इज़ रियली इन द सेफ जोन। बट वो आप कैसे कर पाएंगे? आपको इसके लिए मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे। सेम गोज फॉर जीए एंड इंग्लिश इज वेल। क्या नहीं करना है? सी द डोंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पहली बात कि अब कोई नया स्टडी मटेरियल ना पढ़ें। आपने करंट अफेयर्स के लिए, इंग्लिश प्रिपरेशंस के लिए जितना भी पढ़ना था, जितना भी आपके स्टडी रिसोर्सेज कलेक्ट करने थे आपने कर लिया, और जितनी पढ़ाई करनी थी आपने कर ली। अब ये जो 7 डेज़ है आपको केवल और केवल रिविजन में देने हैं। बिल्कुल भी नया स्टडी मटेरियल अपने स्टडी शेड्यूल में इंट्रोड्यूस ना करें। Overthinking on weak areas, now this is something which I cannot harp on enough, because बच्चे क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट देते हैं और जैसे ही किसी मॉक टेस्ट में अगर उनका थोड़ा भी ख़राब नंबर आ गया, दिस सिंपली गेट डीमोटिवेटेड। प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। यहाँ समझने वाली बात ये है कि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपके एग्ज़ाम से थोड़े से दे आर 1 notch above योर एग्ज़ाम लेवल, सो दैट इज़ वन गुड थिंग, इट प्रिपेयर्स यू फॉर द टफ टाइम। सेकेंडली, just don't get disheartened, work on your weak areas। और इससे डिसहार्टेंड हो, अभी ये जो 7 डेज़ है आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर पे केवल फोकस नहीं करना है, आपको देखना है आप कहाँ अटकते हैं। दीज मॉक टेस्ट आर अ स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस। डोंट ट्रीट देम एज हर्डल्स, डोंट मेक देम योर हर्डल्स, मेक देम योर स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स क्लियरिंग फेज 1, दैट इज़ द प्रिलिमिनरी स्टेज। नेग्लेक्टिंग योर स्ट्रेंथ, कई बार बच्चे वीकनेस पे इतना फोकस करते हैं कि उनके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं उस पर वो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, या ओवर कॉन्फिडेंस में भी कई बार बिना प्रैक्टिस के चले जाते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड कीप ब्रशिंग अप योर वीकनेसेस, उस पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करें और अपने स्ट्रेंथ्स को भी साथ में रखें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट विदाउट एनालाइजिंग इट। आप मॉक टेस्ट देते हैं, अपने नंबर्स जॉट डाउन करते हैं एंड देन आप उसे बंद करके रख देते हैं। Don't do that. That is not going to help you in any case. Even if you're giving 5 mock tests, please analyze it. That is one most important takeaway from this video which I want you to take. आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका एग्जाम 26 को है, प्लीज स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट ऑन 24th नाइट इटसेल्फ। योर लास्ट मॉक शुड बी ऑन 24th। 25th आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं छूने हैं। उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी आपने शॉर्ट नोट्स या एकदम कंसोलिडेटेड जीए के नोट्स इंग्लिश के और रीजनिंग के बना रखें, वो करिए। कोई मॉक टेस्ट आप 25th को ना दें। जस्ट गिव योर सेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू रिलैक्स एंड लेट द नॉलेज सीप इन, जो भी आपने अभी तक रखा है। आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए? सी, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन इज ऑल्सो द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। रीजनिंग में आपको टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट व्हेन वी टॉक ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस, उसमें यू आइदर नो द आंसर और यू डोंट नो इट। इफ़ यू आर मेकिंग अ गेस वर्क, आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इट्स अप टू यू, यू वांट टू टेक दैट रिस्क और नॉट। तो इस अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन का सबसे ज़्यादा एडवांटेज हम कैसे लेंगे? मल्टीपल रिविजन्स करेंगे। यू हैव टू फोकस ऑन द ब्रेड्थ ऑफ द न्यूज़, वॉट एवर न्यूज़ यू आर रीडिंग, वॉट एवर मैगजीन्स जिसमें कि न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, आपको डेप्थ पे नहीं जाना है। बिकॉज सी, दिस इज एन MCQ एग्जाम, यू आर नॉट सपोज टू राइट लॉन्ग आंसर्स। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अब अगर आपने सही से रिविजन करी है तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल नज़र आएंगी, आपको 1-2 कीवर्ड्स दिख जाएंगे एंड यू विल फाइंड योर राइट आंसर। बट व्हेन यू हैव डेडिकेटेड इनफ टाइम फॉर योर रिविजन। सेकेंडली, इंग्लिश में आपकी रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करती है। क्वेश्चन 50 होंगे, हालांकि उनके मार्क्स 25 होंगे। So you have to attempt 50 questions of English in just 40 minutes. So you really need to work on your reading speed. और बहुत alertness के साथ पढ़ना है आपको। आप बिल्कुल लूजली नहीं पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश के पेपर में अलर्ट होंगे, मैं कहूँगी कि आपका पैसेज के जो भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं एक पैसेज से रिलेटेड, वो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दे आर एवरेज
questions, they are not really tough passages. All you need is alertness. The reasoning may, as I have told you, you really need to know which questions to attempt and which ones not to. It is really important कि आप किसी ऐसे क्वेश्चन में अटक के अपना समय व्यर्थ ना करें जो आपको नहीं आता है या जो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है एंड यू आर डाइसी अबाउट इट. प्लीज़ डोंट टच सच क्वेश्चंस. पहले आप मिनिमम 30 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर लें जो कि बहुत इजी हैं और आपसे काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, एंड देन मूव ऑन टू द लॉन्गर क्वेश्चंस और द क्वेश्चंस वेर यू थिंक यू मे स्कोर और यू मे नॉट स्कोर. एंड the last and the very most important point is it is absolutely possible that you are able to do 7 days revision in a very comprehensive way. ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि अब तो सिर्फ 7 days बचे हैं, what am I going to do? You can really do it. See, it's an MCQ based exam. You have to do hard work as well as smart work. Keywords, GA, banking GA जब भी पढ़ें, keywords को ध्यान में रखने की कोशिश करें. इंग्लिश जब भी पढ़े नए वर्ड सीखें. अगर आपने कोई पैसेज पढ़ा है मॉक टेस्ट में, आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं मालूम है या उसके एंटोनिम्स या सिनोनिम्स नहीं मालूम है, प्लीज़ फोकस ऑन दैट. आप एक नोटबुक रख सकते हैं जहाँ आप अपने नए शब्द लिखेंगे. ये आपको ना केवल इस एग्ज़ाम में बल्कि दूसरे एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा. एंड येस, 7 days आर इनफ. जस्ट बी पॉजिटिव एंड यू कैन रियली डू वेल. सो इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट and you think I have contributed anything to your preparation, do like, share and comment on my video. And if you have any questions, feel free to ask the questions. I'll be more than happy to answer your queries. So all the best for your exam. If you have any questions, you have any queries, any doubts, do post them on the comment section below and do like the video. Thank you so much.